Yeah, good morning, everyone, and welcome back to PPS Theory Sessions. We are continuing our fourth unit, Arrays and Strings. And in this unit, this is what we have to cover as a part of syllabus. Concepts of arrays, one and two dimensional arrays, declaration, initialization of arrays and all. And that's what we have seen till now. We have gone through these topics already. So we are done with normal arrays. And today we want to start with the strings. So we'll be looking at string storage. So how strings are stored in the memory. And we'll be looking at few built-in string functions. C has a set of functions already defined. And if you want to use that, you are going to have a header file, string.h header file, and then you can use those functions. Just like printf and scanf, we can use few other string functions. So we will be looking at those string functions also. Today, we are going to have a look at string and string storage part. And if possible, if there is time, we'll be trying to have a look at few basic programs of strings. Okay. So let us start. What is string? Well, string is nothing but again a sequence of characters, right? A string is nothing but a sequence of characters, and when we want to store number of characters, we are going to have a character array, because character is the primitive data type, inbuilt data type in C. And if we want to store more than one element of same data type, then we have arrays, and we already know how to have arrays in a C program. So string is at the end going to be the character array. How? That we will see. So what is string? String is nothing but a sequence of characters that treated as a single data item. That's what we call it, a string. And whenever we want to define a string in a program, we are going to define it between double quotation mark. So something like this. Start your double quote and then start your string. And complete your double quote. So double quotation mark is going to define that this is a string, like this one. And once you have your string, why do we need it? Well, definitely if we want to perform some task, or we want to perform some operations, then the normal or default operations might be something like reading and writing strings, read a string from user, or write a string to screen, output screen, combine two strings, compare two strings, copy one string to another one, extract a portion of the string, and etc. So these are the basic operations that you might require during your entire program. And for these kind of operations, we have some inbuilt functions, right? So that's what we are going to have a look at. Okay, now, Vyom is asking, does string have any size limit? No, not at all. You can have any length of string. But remember, when we say we are going to store a string, we will require character array. And array, when we define array, we need to define a size. So because of array size limit, we are going to have a limitation on string length. But if you already have enough size, then there will be no limitation. Okay. Now this is how we can have a string variable inside a C program. It is actually going to be the character array, right? So char is the data type, then your variable name, and then as long as it is the array in a square bracket, we need to define size. So when you declare your character array, you are already defining size, and that's the only limit for your program. अगर पहले से आप यहाँ पे 1000 कैरेक्टर ले लो साइज, then it's okay, आप 1000 कैरेक्टर स्टोर कर पाओगे. अगर आप इसको 2000 कर दो,
at the declaration time, then you can store 2000 characters at that place. Yeah, so you need to be sure what will be the maximum size I require for my program, so that you can define at the time of declaration of your array variable. So char, then your variable name, and then array size. Character array is going to be the string, right? So all those array fundamentals that we have seen, right? All those array fundamentals that we have seen, we can apply it here. अगर आप डिक्लेरेशन के साथ असाइनमेंट करते हो तो आप ये साइज omit कर सकते हो, right? We will see that, but this is how you can initialize your string at the time of declaration. So this is the declaration, and at the same time I can assign my string. Now default array initialization was something like this, right? If you remember, we need to have curly bracket on and off, and in between those curly bracket what we do is we define all the elements separated by comma. अगर वो integer elements हैं तो सिर्फ numbers आएंगे 1, 2, 3, 4 and so on. अगर वो float हैं तो 1.0, 2.0, 3.0 and so on. अगर वो characters हैं तो एक character आप single quote से define करते हो. Remember, character is defined in single quote, string is defined in double quote. So जब भी आपको ये single quote दिखे, which means it is a single character. So this is how we can have initialize our array in a curly bracket, single characters listed separated by comma, and that is the normal array initialization. But along with this, we can also go for double quotation string note. आप पूरी स्ट्रिंग को डबल क्वॉट में डाल दो, कर्ली ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल विथ स्ट्रिंग्स विथ कैरेक्टर एरेज. So you can initialize a whole string in a single shot, or you can initialize a string character by character. So that depends on your requirement. आपको कैसे जाना है. Fine. So there are two ways you can initialize your string at the time of declaration. Then, as Yusuf was asking, can we omit the size? Yes, you can. If you are initializing your string at the time of declaration, then you can omit the size. But it is similar to the array declaration and initialization. अगर आप size omit करते हो तो इस array की size by default क्या हो जाएगी? It is going to be the equal to the size of your string. Okay, जो size आपके string की है, +1 will be the size of your array. Now why +1? I'll tell you later. Just let us go through these slides and you'll come to know later on. So you can omit your array size if you are assigning value at the time of declaration. अगर आप declaration के साथ assignment नहीं करते हो तो size compulsory है. Remember, size is mandatory if you are not assigning values. Yeah, so that's one way. You can have your size declared more than the string length. It is possible. You can have your array size greater than the length of your string. It is possible, so that later on अगर आपको बड़ी string उसके अंदर डालनी है तो आप डाल सको. So what this example is saying, we have institute array with 25 character size, but we are utilizing only 5 characters right now. 20 characters are right now empty, or we are not using it. It's okay. Later on, if you want to use those characters, you can. But remember, size of your array less than the length of your string is not allowed.
अगर आप 3 कैरेक्टर का एरे लेते हो और उसके अंदर 5 कैरेक्टर स्टोर करने जाओगे तो वो नहीं चलेगा. Which means size of your array must be minimum equal to the length of your string, and maximum it can be anything. So array size must be greater than or equals to the size of your string. उससे छोटा नहीं हो सकता. And now this is the point which I was talking about. Size of character array should be actually the string size plus 1. एक ज़्यादा होना चाहिए. So if you are not assigning this one, have a look at the first example here. If you are not defining size, then the size of this array will be equals to the size of your string, has 5 characters in it, plus 1. So total 6. 6 will be the size. Now that plus 1 is for null character. Null character, and that actually indicates, okay, that actually indicates the end of your string. It indicates the end of your string. Null character. Now null character is /0. Now this is the null character, and whenever you found this null character in your memory, you'll come to know that this is the end of my string, or this is the termination of the string. We will see the memory layout also, and at that time you will see that null character will be at the end of your string always. आपके string के end में null character हमेशा रहेगा. Right? So if you want to store 5 characters, then your array must be minimum 6 size. Okay, it must be at least size of 6 characters, so that you can store M, then you can store E, then you can store F, then you can store G, then you can store I, and to indicate this is the end of my string, I should also store null character at the end. Now when I do this thing, I'll say this is the end of my string. Okay, so that's the null character. And this way of initializing a string is only possible if you are initializing it at the time of declaration. When you declare, in the same statement, if you initialize, only then it is possible to have this kind of assignment. Declaration और assignment अगर आप अलग अलग करोगे तो आपके प्रोग्राम में error आएगा. You cannot assign entire string to a variable directly if it is not declaration statement. फिर से बता दूं, पूरी स्ट्रिंग आप तभी असाइन कर पाओगे जब आप डिक्लेयर करते हो वेरिएबल. डिक्लेरेशन स्टेटमेंट अलग है, और उसके बाद अगर आप इस तरह से स्ट्रिंग असाइन करने जाओगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा. दिस इज नॉट अलाउड. यू कैन नॉट असाइन एंटायर स्ट्रिंग विथ इक्वल्स टू साइन. इक्वल्स टू करके आप पूरी स्ट्रिंग को असाइन नहीं कर पाओगे. इट इज ओनली पॉसिबल when you go for declaration statement. Okay, so these are the few different ways of declaration and initialization of a string variables. Now how it will be stored in a memory. So as you know, C in a string, in a C, string is nothing but a character array. So character, then your array variable name, and then the size. So when you define a size, inside your memory you are going to have those many elements. तो 0 से लेके 9 तक का इंडेक्स वैल्यू आपको मिल गया. इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 5 up to 9. Total 10 elements you have.
Those elements are of character data type. Okay, so it requires 1 byte. Remember, एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट चाहिए, तो 10 कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए आपको टोटल 10 bytes चाहिए होंगे. Look, when I say bytes, capital B, if I say bits, then small b. So this array is having total size 10 bytes, and we can store 10 characters. Now, if we go for MEFGI, then we will be using initial 5 elements to store those characters. वो हर बार एक एक कैरेक्टर एक एक एलिमेंट में डाल देगा. And after that, it will also store that null character, which is actually the termination of string. And this is how your string will be stored inside your memory. अब as long as it is the array, आप particular character individual भी access कर सकते हो. If you write institute of 2, तो आपको F मिलेगा. If you write institute of 4, तो आपको I मिलेगा. So as long as it is the array, you can access those characters individually also. And if you want to print this entire string, तो printf के अंदर आप %s करके भी print कर सकते हो. So the question comes now, how we can take value and how we can print these values. हम किस तरह से ये string user के पास से ले सकेंगे और कैसे हम print कर सकेंगे. So that's what we want to see next. Right? So to read a string from user or maybe from a terminal, we have number of functions in C which we can use. And we have already gone through these functions in, I believe, second unit, IO functions. Okay. Input output functions हमने जब देखे थे तब हमने ये सारे functions cover भी किए थे. Let us quickly go through these functions one more time. And right now we will be focusing on string only. Okay. So there is scanf, there is getChar, and there is getS function, input functions using which we can take some input. लेकिन अब हम फोकस करेंगे कि इस functions को यूज करके string value कैसे get कर सकते हैं. So let's see that example. Let us assume that we have a character array name and it is of size 20 characters. Okay, so that's the declaration of character array or the string variable, and we have given a proper message to user that enter your name. Printf, enter your name. So user knows that he or she need to enter a name. Now our program must be expecting string input here. So अगर आपको एक string लेना है तो आप scanf यूज कर सकते हो. scanf and then फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है उसके अंदर प्लेस होल्डर स्ट्रिंग के लिए आ जाएगा %s. %s will be the placeholder in a format string. And then for this placeholder, we need to have a variable here. So the next parameter here is the variable name. Right? Name. अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखो. Yes, Jay has pointed out in scanf ampersand sign won't be there. He is asking a question and let me answer that. Remember, for integer, float, character, all those primitive data type. Okay, all those primitive data types, if you are going for scanf, then percentage whatever it is, percentage D, F, C or whatever, right? You need to have ampersand sign and then variable.
But whenever you are going for string, no ampersand sign. Remember this thing. If you are taking string, then there will not be ampersand sign in the scanf function. Only if you are going for string. Other than string, हर बार आपको ampersand sign आगे लगाना पड़ेगा. Remember. Now we will be looking at what is ampersand sign in detail when we go for pointers. Functions and pointers जब आएगा तब आपको पता चलेगा. This ampersand sign is actually the address operator. Okay, it is address operator which gives us the address of a variable. अब string के केस में हमें एड्रेस देने की जरूरत नहीं है. Why? Because when I say a string variable name is my variable, then it is actually equivalent to ampersand name of 0. अब ये दोनों इक्वल है. Now what is this? This is a string variable name. Okay, and what is this? This is actually the address of 0th element in name array. Okay, square bracket 0 means it is the 0th element. 0th element of what? Name variable. And जब मैं उसके आगे address operator लगाता हूँ ampersand sign, it gives me the address, right? तो ये statement जो है, it is going to give me the address of 0th element from the given array. तो एक तरह से जब मैंने सिर्फ ये नाम लिखा तो वो नाम मेरे 0th एलिमेंट का एड्रेस मिल गया. scanf को एड्रेस चाहिए तो उसको एड्रेस मिल गया. जब भी मैंने नाम दिया तो इनडायरेक्टली उसको एक एड्रेस मिल गया. एंड दैट्स व्हाई वी नीड नॉट टू हैव एम्परसेंड साइन बिफोर स्ट्रिंग वेरिएबल नेम. रिमेंबर, अगर स्ट्रिंग है तो एम्परसेंड नहीं करना है. स्ट्रिंग नहीं है तो हर बार एम्परसेंड साइन स्कैनफ में आएगा. Okay, so that's one thing. Now Ajay is asking that in array also, forget about string, other array also we declare a variable name and we use it like this only. तो फिर वहां पे हमें ampersand क्यों देना पड़ता है, right? That's the point. अब समझ लो, लोग string लेने के लिए आप पूरा string एक साथ get कर सकते हो using %s. तो ये this is the whole string. राइट, लेकिन अगर आप इंटीजर ARR और 5 लेते हो तो ये 5 एलिमेंट हो गए. अब %d से आप एक ही एलिमेंट ले पाओगे, राइट? आप 5 एलिमेंट गेट नहीं कर सकते हो, विच मीन्स %d से अगर आप एक ही एलिमेंट लेते हो तो ARR के अंदर कौन सा एलिमेंट लेना है आपको वो इंडेक्स देना पड़ेगा, मे बी सेकेंड एलिमेंट. अब जब आप सेकेंड एलिमेंट एक्सेस करते हो तो दिस इज योर एलिमेंट. ओके, दिस गिव्स यू द एलिमेंट. अब उस एलिमेंट का एड्रेस जब चाहिए तो आगे एम्परसेंड कंपलसरी लिखना पड़ता है एंड दिस गिव्स यू द एड्रेस, राइट? सो व्हाट आई सेड, व्हेन यू गो फॉर स्ट्रिंग, अगर आप पूरा स्ट्रिंग एक साथ लेते हो तो एम्परसेंड करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप कैरेक्टर लेते हो तो आगे एम्परसेंड करना पड़ेगा.
%C ampersand नेम ऑफ 0। अगर आप कैरेक्टर लेते हो अपने नाम का तो एम्परसेंड कंपलसरी करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर एक्सेसिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट और उस एलिमेंट का एड्रेस देना पड़ेगा। लेकिन मान लो कि आप पूरी स्ट्रिंग एक साथ लेते हो यूजिंग %S, तो यहाँ पे मुझे कोई इंडेक्स लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आई एम एक्सेसिंग एंटायर स्ट्रिंग। अगर एंटायर स्ट्रिंग के लिए जाता हूँ कोई एलिमेंट नहीं है, देन रिमूव एम्परसेंड साइन। Right, so that's one point. When you go for entire string, need not to have ampersand sign. When you go for one by one elements, you need to have ampersand sign there. Okay, 71 number is saying, but if we take %f instead of %d, then it will be possible. No, well, remember %d is referring to integer, %f is referring to float data type. तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि इंटीजर एरे को फ्लोट डेटा टाइप से गेट कर लो, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो दीज आर द फ्यू रीजंस, एंड व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, अगर आप स्कैनएफ से स्ट्रिंग पूरा स्ट्रिंग एक साथ गेट करते हो, एम्परसेंड नहीं आएगा, नो एम्परसेंड साइन। Okay, so that's using scanf. We do have getChar function also, right? Now if you want to go for getChar, तो आपको पता है कि getChar function क्या करता है, एक कैरेक्टर लेता है, it takes one character only। अब हमें तो यहाँ पे string चाहिए, और string क्या है actually, it is a collection of characters। So when I do getChar, वो मुझे एक कैरेक्टर देगा। मुझे एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स अगर गेट करने हो तो रिपीटेडली प्रोसेस चलाना पड़ेगा। So we will go for for loop, while loop, do while loop, whatever you want, आप कुछ भी ले सकते हो। और जब आप गेट केयर करते हो तो वो एक कैरेक्टर देता है, वो एक कैरेक्टर को आप एक एलिमेंट के अंदर असाइन करोगे। सो नेम ऑफ आई, अब आई क्या है, लूप लिया आपने 0 से लेके 20 का, so this is going to take 20 characters from user, and it is going to store those 20 characters inside that character array। Fine, so पहला कैरेक्टर जाएगा नेम ऑफ 0 में, दूसरा कैरेक्टर जाएगा नेम ऑफ 1, then name of 2, name of 3, name of 4, name of 5, 0 1 2 3 4 5, all those are indexes here। so एक एक कैरेक्टर करके भी आप ये सारी वैल्यूज गेट कर सकते हो। So that's using getChar, and there is getS function also, where the syntax is the getS function, and वो फंक्शन के अंदर ब्रैकेट के अंदर आपको अपने वेरिएबल का नाम लिखना है यहाँ पे। So just a variable name, you pass it as a parameter, and that's how you can get the entire string from user। Now you can say, okay, getChar तो एक एक कैरेक्टर देता है, that's not feasible। Then we have two options, scanf and getS। हमारे पास ये दोनों ऑप्शन है, हम scanf भी कर सकते हैं, हम getS भी कर सकते हैं कोई एक स्ट्रिंग लेने के लिए। अब इन दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए और क्या डिफरेंस है दोनों में, I'll show you when we go for the program। okay okay I'll show you what is the difference between scanf and getS when we go for the program। अभी के लिए आप ये याद रखोगे कि there are 3 different ways by which you can take your entire string। scanf और getS से पूरी स्ट्रिंग एक साथ ले सकते हो, getChar से आप एक एक कैरेक्टर ले सकते हो रिपीटेडली।
शुभम इज आस्किंग गेट केयर का यूज एरे में कर सकते हैं. Look, this is your array. Character array ही तो है. So it is array. But you cannot use getChar for integer float data types. Integer float double उसके लिए आप getChar नहीं कर सकते because getChar function is specifically to get one character. एक character लेने के लिए है, एक integer लेने के लिए नहीं. Okay. So this is a special function which gets one character from the user. अगर आपको integer, float या double value चाहिए तो आप character getChar function use नहीं कर पाओगे. Yeah. So these are the three functions with which we can take string value. तो फिर how do we print it? So to print a string value, you have printf, putchar, puts. Again, these three functions we have already covered at the time of IO operations in second unit or so, I believe. Let us quickly go through these three functions again. So if I do have a string with me, अगर मेरे पास already एक string है और मैं उस string को output में print करना चाहता हूँ, right? अगर मैं उसको output में print करना चाहता हूँ, then I can go for printf %s variable name. So this %s is important here. That indicates you are printing a string. अगर putchar से आपको प्रिंट करना है तो putchar क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा. आपको पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो आप लूप चलाओगे, i इक्वल्स टू 0 से लेके i प्लस प्लस करते जाओ और नेम ऑफ i एक एक कैरेक्टर प्रिंट करते जाओ यूजिंग putchar. अब ये लूप कहाँ पे अटकेगा? हर बार जरूरी नहीं है कि जितना आपके एरे का साइज हो उतने कैरेक्टर्स आपकी स्ट्रिंग में हो. दैट्स नॉट नेसेसरी. रिमेंबर. मानव इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड एरे. स्ट्रिंग और एरे में एक ही डिफरेंस है. अगर आपका कैरेक्टर एरे है तो आप उसको स्ट्रिंग बोल सकते हो. अगर वो इंटीजर, डबल, फ्लोट एरे है तो आप उसको स्ट्रिंग नहीं बोल सकते. दैट्स इट. फाइन मानव. Okay, Hers is also asking, is it possible to have string 1D, 2D, 3D arrays? Yes, it is possible. And we will be doing that example with the same result program we have already created. So at the end of this unit, we will be going for 2D string array also. 2D array, 2D character array, which can have multiple strings. But हम वो बाद में देखेंगे. Let us focus right now on how to take values and how to print values. So back to the point, I was saying that it is not necessary कि आपकी array की जो size है उतने characters आपकी string में हो, ये compulsory नहीं है. That means जब आप loop चला रहे हो and you are printing your characters one by one, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये लूप कहाँ तक चलेगी. क्या मुझे 20 कैरेक्टर्स प्रिंट करने होंगे? वेल, नॉट एग्जैक्टली. आपको कितने कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं? जितने कैरेक्टर्स आपकी स्ट्रिंग में है. अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी स्ट्रिंग खत्म हो गई? दैट्स द रीजन वी हैव null character at the end of our string. Every string will have null character at the end. लास्ट में null character होगा. अगर ये स्ट्रिंग आप खुद से बना रहे हो तो null character आपको रखना पड़ेगा. We will see those programs, those kind of programs. Okay. लेकिन अभी के लिए आप क्या समझोगे? String will have null character at the end. तो मुझे लूप कहाँ तक चलाना होगा? जब तक मुझे null character नहीं मिलता है तब तक. So my condition is something like name of I, which gives me one character from the string,
If that character is not equals to null character, then I'm going to print that character. अगर वो null character नहीं है तो मैं print करूंगा, अगर वो null character है तो मैं ये loop terminate कर दूंगा. Okay, अगर वो null character है then we will stop this printing process. If it is not null character, we will continue printing those characters. So that's how you can print your entire string character by character. And there is one more, putS function. Just like getS, we have putS. PutS and the variable name is going to put your string. It is going to print your string on your screen, output screen. So these are few functions which we can use for printing our string on the output screen. Yeah, Vyom is asking, what exactly is the advantage of string over array, as we are able to do with string that is also possible by array, character array, also possible by character array, to be more specific, right? If you simply say array, तो array तो कोई भी हो सकता है, integer, double, float, character, कोई भी array हो सकता है. आप string को compare कर सकते हो character array के साथ, because string at the end, string is nothing but a character array. So, well, if you ask me what is the difference between string and character array, there is only one difference. बाकी दोनों सेम है, कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग दोनों इक्वल है. सिर्फ एक ही डिफरेंस रहेगा, अगर आप लास्ट में नल कैरेक्टर रखते हो तो आप वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स को एज अ स्ट्रिंग रेफर कर पाओगे. एंड इफ यू से दैट यू आर गोइंग टू रेफर इट as a string using single reference name, then you can have benefit of these things. %s का benefit ले पाओगे, या तो फिर getS या putS कर पाओगे. तो अगर आप उसको एज अ स्ट्रिंग रेफर करते हो तो आपके पास बेनिफिट ये हो गया कि आपको ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लेंदी प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, आप एक सिंगल स्टेटमेंट से अपना काम कर पाओगे. So to have some flexibility on the process, we have character array represented as a string. String कोई डेटा टाइप नहीं है, जैसे कि जावा के अंदर आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप मिलता है, लेकिन सी के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है. रिमेंबर, स्ट्रिंग इज नॉट अ डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज. कैरेक्टर एरे को हम स्ट्रिंग मानते हैं, और हम ये कब मान सकते हैं? व्हेन वी हैव दैट नल कैरेक्टर एट द एंड. आप कैरेक्टर एरे के अंदर सारे कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, फॉरगेट अबाउट नल कैरेक्टर, then it is character array, it is normal character array, right? और वही normal character array को आप loop से execute भी कर पाओगे, need not to have this null character. आप 20 तक चला लो, loop हो जाएगा, लेकिन आपको वहां पे पता नहीं चलेगा कि आपकी string कब खत्म हो गई. You have to go for 20 iterations, and जितने कैरेक्टर्स आप स्टोर करते हो कर लो, बाकी के कैरेक्टर्स आपको एम्प्टी रखने पड़ेंगे. अब इज देयर एनी एम्प्टी कैरेक्टर? आप कहीं पे भी पढ़े हो अल्फाबेट में? इज देयर एनीथिंग लाइक एम्प्टी कैरेक्टर? नो. दिस नल कैरेक्टर इज इक्विवेलेंट टू दैट एम्प्टी कैरेक्टर. सो अगर आपका कैरेक्टर एरे बड़ा है, whatever than you require, तो ये दो एलिमेंट खाली तो आप रख नहीं सकोगे, कुछ ना कुछ कैरेक्टर आपको असाइन करने होंगे, और अगर आप असाइन नहीं करते हो तो वहां पे कुछ गार्बेज वैल्यू होगी, राइट? कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू होगी. टू रिमूव दैट गार्बेज वैल्यू,
actually we are going to store null character there. और जैसे ही वो null character आता है ये एक string बन जाएगी, right? So that's how null character will help us, and at the end if it is string then why not to get help of these functions %s और getS putS का benefit हम क्यों ना लें? And why not to go for string related functions from string.h file, जहां पे आप दो string को डायरेक्ट कंपेयर कर पाओगे, string को रिवर्स कर पाओगे, दो string एक string को दूसरे में कॉपी कर पाओगे, concat कर पाओगे. So we have those functionalities available, and that's why we learn string separately, otherwise it is array. Okay. Yeah, we will have a look at scanf and getS difference, printf and putS differences at the time of programs when we do, and that's what the next thing we are going to do. Not today because we are at the end of this session, almost time passed. So we'll be doing some programs in a next lecture after your GTU final exams. So whenever you come back, we will have a look at, we'll quickly go through revisions of these functions and then we'll jump into the program code. So that's all. Thank you everyone. Thank you for being part of this session here, and see you in the next lecture. Till then, all the best for your examinations. Bye-bye.